वेलकम और वेलकम बैक गाइस, दिस प्रेम योर होस्ट एंड आपका दोस्त। आज हमारे साथ स्क्रीन पे हैं सनम आलम खान। शी इज़ वर्किंग इन डिलॉयट ग्लासगो ऑफिस में काम कर रही हैं और हमारे साथ आज काफ़ी चीज़ों पे डिस्कस करेंगी। बेसिकली कि यार फर्म में लाइफ किस तरह की होती है, गर्ल्स के लिए क्या चैलेंज होते हैं सीए की लाइफ में, बीइंग फर्म, बीइंग अब्रॉड एक्सेट्रा। एंड देन शी इज़ ऑल्सो इन्वॉल्व इन सम अदर एक्टिविटीज़ ऑन द प्रोफेशनल साइड के या ग्रूमिंग काउंसलिंग वगैरह में। I'm not going to give the complete intro. She's going to do it herself. So I'll refer to her कि अपना थोड़ा सा introduction दें कि how's her journey, कैसी रही, and then पूरे एक कहानी बताएं अपने हिसाब से कि how she has developed as a person from start till now in Deloitte. Okay, so my journey CA की sort of started with PWC. वहाँ पर मैंने अपने articles करे and alhamdulillah right after articles मेरी first job was Deloitte UK में and इसके साथ I've always been involved I guess since 2014 या 15 मैं GC में involved हो गई थी CA counselors में कुछ 1-2 साल बाद हुई थी and अभी I do admit I'm guilty for not being as active anymore especially since I moved out but यहाँ की life is not a piece of cake at all. उस वक्त मेरे पेरेंट्स मेरा ख्याल कर रहे थे, मेरे लिए खाने पक रहे थे, मेरे कपड़े धुले जा रहे थे, but now I have to do everything myself. तो मुझे उस type of charity काम का मुझे time नहीं मिलता अब. And apart from that, यहाँ पर जैसे I guess पाकिस्तान में sort of like भाई भाई वाला सीन हो गया. यहाँ पर थोड़ा देखते थे कि यार लड़की है वो थोड़े से बहुत sort of benefits होते थे काम में. यहाँ पर everyone's equal, which is a very good thing in my opinion. True, exactly. I think there is no difference. And to be fair, in my team, my own team's leadership is female oriented. So they're leading the business, and that's awesome. Everybody is equal. Yeah. अच्छा, ये आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो गई, थोड़ा एजुकेशन पे भी हम जाने की कोशिश करेंगे कि हाउ इट हैज़ गॉन थ्रू फ्रॉम स्टार्ट, हाउ हैज़ बीन योर एजुकेशन जर्नी एंड देन फर्म जर्नी इटसेल्फ कि आप you have worked in AFF, everybody knows that's a tough one out there, सबसे ज़्यादा tough वही है. So how you manage your time, different your counseling as well, and then education, the firm experiences and everything. मेरी जर्नी थोड़ी सी weird है. Okay. The sense कि I never cared about being a chartered accountant, to be honest. Okay, that's तो interesting. मैंने ज़्यादा उसमें interest लिया नहीं because I did start with CA. मैं जब D module तक आके because I knew Big 4 में तो आना है तो D module तक like shoot out कर दिया. उसके बाद जब 1.5 years का gap आया हमारे E module देने में, everybody was chilling, सब बैठे हुए थे कि चलो काम करते हैं, outings करते हैं. And I was like, यार why not मैं ACC में उसको exemptions का बहुत अच्छा scene आया था. So I just had to give 7 papers and I was like, let's go for it. देखते हैं क्या होता है. And within those 1.5 years, मैंने ACC qualify कर लिया. अब मेरे ऊपर आई सुस्ती कि यार should I try E module. मेरा एक ये है कि I never gave ENF module a chance. एक होना चलो आप फेल हो रहे हो तो आपने बैकअप प्लान बनाया या कुछ भी बनाया. मैं सुस्ती यहाँ पर आई कि my sister already resides in Ireland. She works in PWC Ireland. Oh, yeah. And she's been there since 5 years. So she told me कि if you want to come in UK, वहाँ पर ACCA CA same है. If you want कुछ अपना को differentiate करने के लिए कुछ कर लो. So I was planning on doing CISA because I was really interested in IT audit because मैंने अपने PWC department 1 year IT audit में serve करा articles में. तो मेरा interest अभी तक वहाँ पर है. तो probably there are chances कि मैं future में IT audit may be consider करूँ. But first I did start studying for CISA as well. But मैंने वो papers देने का बाद में फिर सोचा because मेरा फिर ACC हो गया था, articles चल रही थी and job के लिए मुझे calls and interviews आना शुरू हो गए थे. तो that's where I got a bit lazy with CA कि मैंने कभी attempt नहीं करा because I saw my seniors यार frustrated थे सब. ये paper pass नहीं हो रहा, वो paper pass नहीं हो रहा. I was like यार मैं ACC qualified बैठी हुई हूँ, membership भी मिल गई है, तो why do I care about all of this? So I never went through ahead with that journey and alhamdulillah I till date मुझे कोई sort of guilt नहीं है कि मैंने CA नहीं किया because of ACCA today I'm here as an assistant manager in Deloitte. So I never needed CA to be honest.
I मुझे completely agree गिल्ट with you. कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे. Probably even not CA, ACCA, if there are somebody else, वो भी एक अच्छे एक्सपीरियंस से आ रहा है. They are almost equal. Nobody really cares आपकी क्वालिफिकेशन क्या है. And for everybody who's watching, पाकिस्तान में हम लोग लिखते थे अपनी सिग्नेचर के साथ CA. I don't care to write here. मेरी सिग्नेचर कुछ नहीं लिखा होता. And nobody writes here. Nobody cares आप कहाँ कौन सी या क्वालिफिकेशन है. पार्टनर इवन डजंट गिव अ शिट कि वो उसके बारे में क्या लिखा, उसके नाम के Yeah, आगे, दे डोंट केयर. yeah, अगर आप मेरे काफी यहाँ पर कुछ काफी मेरे फर्म में ही मेरे डिपार्टमेंट में एसीसी भरे हुए हैं, आईकास स्कॉटलैंड का सीए है, आईसीडब्ल्यू है जो इंडियन एंड वेल्स का सीए है, और पाकिस्तान के सीए भरे हुए हैं, एंड हम सबकी प्रमोशन सबके पैसे सेम है. yeah. It never affected at least my career in UK, but I would not recommend it for someone जो पाकिस्तान based है. पाकिस्तान में सीए को इम्पोर्टेंस बहुत दी जाती है, वो हम डिनाई कर नहीं सकते. अगर इम्पोर्टेंस दी जाती है, इंडस्ट्री इम्पोर्टेंस देती है, तो आप फिर उसी जर्नी पे फॉलो करें एज मच एज पॉसिबल. या आई थिंक जस्ट टू हाईलाइट कि कोई ऐसी से खाम खा ना चला जाए, बिकॉज बाहर जाने के चक्कर में तो देयर इज ऑलवेज डिफरेंस. बाहर की अपॉर्चुनिटी सबको नहीं मिलती. ऑफ कोर्स डिपेंड्स ऑन एवरीबॉडी कौन कितना प्रेजेंट कर सकता है खुद को. सो इट्स नॉट लाइक कि आपने ये छोड़ के इसी से भी चले गए कि मैं बाहर जाऊंगा एंड बाहर नहीं चले गए फिर यार आप हमें बोलोगे कि आप लोगों ने बोला. तो दैट्स नॉट लाइक दैट. लोग काफी लोग करते हैं ACCA एंड दे हैव सक्सेसफुल करियर्स. बट आई हैव वीडियो ऑन चैनल एज वेल. मैंने काफी डिटेल्स में बात की है. पाकिस्तान में रहना है या अपने कंट्री में रहना है तो क्या करना चाहिए, अगर बाहर जाना है तो क्या करना चाहिए. तो यू कैन वॉच दैट. आई शेयर दैट लिंक एज वेल. तो ये हो गई बात हमारी. बाकी आई थिंक फिर आपसे CA की जर्नी जो लड़कियों की स्ट्रगल होती है बेसिकली आर्टिकल्स में, आई थिंक यू वुड नॉट हैव फेस दैट कि पढ़ाई करनी है मुझे बेसिकली CA के जो सब्जेक्ट्स हैं एंड देन AFF का काम जो है आपको पता है कि कितना है. तो मेरा वो डिफरेंट स्ट्रगल था उस मामले में, या बिकॉज फॉर सम रीजन, चलो मैं एसी सॉरी मैं एफएफ के बारे में ज्यादा कहना नहीं चाह रही. everybody knows that, everybody knows that. Because I do give credit to AFF that because I'm here, मैं आर्टिकल्स AFF में रहती, मैं यहाँ नहीं होती, but उधर की स्ट्रगल्स थोड़ी सी अलग मसले थे, तो I could not tell anyone कि मैं ACCA कर रही हूँ. Yeah, that's They interesting. would have like I don't know, मतलब मुझे मेरा एक मैनेजर था, he was a very good person to me and he told me कि सिर्फ मुझे पता है, बट तुम सिक लीव मार देना या फिर तुम लीव्स ले लेना, कुछ भी कर लेना, लेकिन डोंट टेल पीपल कि तुम एसीसी के पेपर के लिए जा रहे हो. आई नेवर गॉट लीव्स टू स्टडी फॉर माय पेपर्स. मैं क्लासेस के लिए जाती थी तो आई यूज्ड टू गेट क्रॉस क्वेश्चन के क्यों जाना है तुम्हें क्लासेस में, किसकी क्लासेस हैं, क्या है. फ्राइडे नाइट हो, सैटरडे हो, संडे हो, मैं अपनी ना वीकेंड क्लासेस लेती थी ताकि मंडे टू फ्राइडे आई डू नॉट हैव टू लाइक टेल पीपल वेयर आई एम गोइंग. Yeah. पर सैटरडे संडे भी मुझे बुलाया जाता था, कहते थे कि ऐसी कौन सी क्लास है जो जिसका हमें नहीं पता. तो आई हैड टू लाइक हाइड द फैक्ट आई एम स्टडीइंग, आई एम टेकिंग क्लासेस, आई एम गिविंग पेपर्स. तो एक अलग किस्म, जैसे पता है बहुत बड़ा गुनाह कर रही थी. I was just receiving education, which is something not very popular in Pakistan, I guess. I don't want to bring it up, but I know कुछ हुआ था एक टीचर और एक AFF के पार्टनर के बीच में कुछ तनाजा हुआ था कुछ टाइम के लिए. Then people were asked not to take classes. So there was something back in time. Let's not go over there. चलें, एजुकेशन जर्नी तो आपकी बड़ी क्लियर है. You got a good route, इसी से क्वालिफाई हो गए and then you got the journey. But work wise in the firm, as you mentioned कि वीकेंड भी लगते हैं, and then how do you manage the time? Because let's say somebody who is a girl outside of their home, basically कहीं और शहर था उनका, वो they move to Karachi or some other city, and then how they are gonna manage that timelines. अपना काम भी देखो, let's say FF firm में ही आती हैं and then they have so much work to do, they have to study to do, and then घर के काम भी. And हमारे लिए स्ट्रगल सबके लिए होती है, बॉयज के लिए भी होती है, but I think girls have more struggle. So any comments on that? एक चीज मैंने एएफएफ में अप्लाई की थी, जो देखें जैसे हर चीज के कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, फिर आप सांस भी लो तो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं. तो व्हाट हैपेंड वाज कि मैं सैटरडे संडे ना, सिंस मैं सिर्फ उन्हीं दिनों में पढ़ पाती थी और एसीसी के पेपर्स हर 3 मंथ्स होते हैं, आई स्टार्टेड टेलिंग देम कि मैं नहीं आ रही, व्हिच वाज लाइक अ बिग प्रॉब्लम फॉर देम. तो मंडे टू फ्राइडे मैं पूरी जान मार देती थी, जो मुझे काम एलोकेटेड होता था मंडे टू फ्राइडे में करती थी. मैं थक जाती थी, पढ़ नहीं पाती, लेकिन सैटरडे संडे यूज्ड टू बी माय लाइक यार दैट्स माय टाइम टू माय स्टडीज एंड माय Yeah. क्लासेस. नो बोलना थोड़ा सा
I guess उससे मेरी reputation खराब हुई वहाँ पर. People did not like me as much. They did not want me on their team solely because मैं Saturday Sunday के लिए no बोलती थी. But no one cared that Monday to Friday मैं अपनी जान मार रही हूँ. तो ये एक इशू हो सकता है कि with consequences आप फिर no कहना सीखो. What I noticed was कि I had some female friends जिनके ना जैसे drivers या उनको fathers pick up करने आते हैं, तो उन्होंने day one से बोल दिया, भाई मैं इस टाइम तक होंगी, इससे ज्यादा मेरे फादर अलाउ नहीं करते, आई एम सॉरी. तो आई नोटिस दैट पैटर्न अगर स्टार्ट से रखो ना, तो दैट हेल्प देम कि सबके पता था कि यार इसके पहले से ऐसे इश्यूज हैं. What I started was saying yes to everything, 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 and then at one point when I realized that I have to study and मैं पेपर फेल नहीं करना चाहे बिकॉज एसीसी के पाउंड्स में पेमेंट होती है, आई कुड नॉट. तो मुझे करना नहीं था. तो after saying yes, when they knew कि मेरे घर से कोई problems नहीं है, when I started saying no, that's when problems started happening. तो I would suggest कि अगर आपका शुरू से है, don't be scared, just say that. हालात एक है, you know, thing in Pakistan जो आप बोल सकते हो as a female, अपने फादर का बोल सकते हो, फैमिली का बोल सकते हो. आप ये कह दो कि जेन्युइन इशू है, मैं ये नहीं करना चाह रही. एंड डे वन आई एम नॉट सेइंग कि जैसे एग्जांपल मैं सेक्शन सी में थी, तो बैंक्स पे फिर मुझे प्रेफर नहीं किया जाता था बिकॉज बैंक्स रिक्वायर अ लॉट ऑफ लेट वर्क, और जो लड़कियां करती थी उनको प्रेफर किया जाता था. आई एम नॉट सेइंग कि आपको हर अपॉर्चुनिटी इक्वली मिलेगी, बट ऑनेस्टली यहाँ पर जब मैंने इंटरव्यू दिया, नथिंग मैटर्ड. मैं जब डिलॉयट में इंटरव्यू दे रही थी, दैट्स व्हेन आई रियलाइज कि यार मैं जितना परेशान होती थी कि यार मुझे बैंक नहीं मिला, मुझे वो नहीं करने को मिला, मुझे ये नहीं करने को मिला, एंड व्हाट इफ माय एक्सपीरियंस इज नॉट एज गुड एज द अदर पर्सन अप्लाइंग फॉर द सेम डेजिग्नेशन. एंड इट डिडंट मैटर. ऑल दैट मैटर्ड वाज कि मेरा जो इंटरव्यू था डिलॉयट का वाज, I wouldn't even call it a proper interview because we were talking about the most random things. मैं अपने पार्टनर के साथ जो आज भी काम कर रही हूँ, we were talking about the most random things, and he just asked for my experience or technical questions भी नहीं हुए. And that's when and he promised me that when I come here, he will help me through everything. And you know, in Deloitte, when I came here, I told my partner that I had a very hard time. And मुझे थोड़ा सा कुछ प्रोफेशनली कुछ मुझे इश्यूज फेस करने पड़े because Pakistan का work environment is not as friendly or as caring. And he and my senior manager actually really helped me through it all. आज अगर मैं जो कॉन्फिडेंट हूँ अपने काम में, या फिर मैं क्लाइंट कॉल्स लीड कर रही हूँ, मैं पूरी टीम मैनेज कर रही हूँ, is because they helped me through whatever I went through. And that's when I realized कि यार ये होता है work environment. So पाकिस्तान में अगर आपको स्ट्रगल हो रही है, बड़े क्लाइंट्स नहीं मिल रहे बिकॉज यू हैव टू से नो फॉर योर स्टडीज. क्वालिफिकेशन, मैं क्वालिफाइड थी तो मुझे आर्टिकल्स के फौरन बाद जॉब मिली. आप क्वालिफाइड नहीं होंगे, आप यस करते रहेंगे, आप टाइम देते रहेंगे काम को, इट विल एंड अप मीनिंग नथिंग. बिकॉज आई हैव पीपल हियर जो बिकॉज दे डिडंट क्वालिफाई ऑन टाइम, तो उनका 7-8 years का एक्सपीरियंस है, मेरा 3.5 years का एक्सपीरियंस है, हम सब सेम डेजिग्नेशन पे. मैं हमेशा कहती हूँ focus on qualification more, भले no बोलना पड़े. So, I completely agreed. I think in my first year as well, मैंने भी एक supervisor से थोड़ा सा फड्डा टाइप किया था. The person was not allowing me to go to classes. Like, no, I will go. So करना पड़ता sometimes as needed, but don't go aggressive side. You have to manage. You have to make a balance. It's not like do or die thing. Everything should be balanced in corporate environment. That's massively helpful. और I think इसके साथ ही हमारा दूसरा क्वेश्चन जो लिंक हो रहा था, जो चीज़ हम जानना चाह रहे थे कि एक बिकॉज इन यूके जब हायरिंग होती है तो वो एक टेक्निकल तो सबको आता है, 4 साल काम करके आए हो, 3 साल काम करके आए हो, सबको कुछ ना कुछ आता है. नहीं आता तो वो सिखा भी देंगे, देयर इज नो इशू. द एक्चुअल हायरिंग इज एक्चुअली बेस्ड ऑन हाउ यू टॉक, हाउ यू प्रेजेंट योरसेल्फ. और अब क्वेश्चन ये है कि जब एक 3.5 साल के आर्टिकल्स का टाइम है, उसमें अपॉर्चुनिटीज के लिए किस तरह स्ट्रगल करना. बेसिकली एज ए गर्ल यू माइट नॉट बी प्रिफर्ड ऑन बैंक्स एज यू सेड, या कुछ और आपको इस तरह की एंगेजमेंट्स ना दी जाए. सो हाउ यू आर गोना ट्राई योर ओन जर्नी इन दैट पर्सपेक्टिव के मैं एक अपनी प्रोफाइल बनाऊं 3.5 साल के अंदर, पर्सनली एंड प्रोफेशनली एज वेल, having those leadership skills, communication skills, client management, all those skills. क्योंकि वही टाइम है हमारे लिए सब कुछ करने का, be it boy, be it girl. When you are faced with those struggles, then how do you manage on that?
तो when I felt कि मुझे ऑडिट में इतना एक्सपोजर नहीं दिया जा रहा, मुझे बैकग्राउंड में रखा जा रहा है, इवन दो इन माय ओपिनियन मैं अपने आप को ना प्रेजेंटेबल कर सकती थी एंड आई कुड हैव टॉक टू द क्लाइंट एंड मेरे इतने स्किल्स थे कि मैं मैनेज कर सकूं, बट मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं दी जा रही थी बिकॉज लाइक दे जस्ट डिडंट ट्रस्ट मी, या फिर मुझे बस अपॉर्चुनिटी देना नहीं चाहते थे वो लोग. तो व्हाट आई डिड वाज फॉर माई सेल्फ, मैंने स्विच मारा टू IT ऑडिट. Yeah. New department starting from scratch, but it wasn't exactly from scratch because all the people are connected. So मेरी बात like in negative way मेरे डायरेक्टर को मेरे आने से पहले पहुंचा दी गई थी. तो but honestly then I met a wonderful manager and he's currently in London as well. तो वो IT audit में थे purely like from the start. No. तो उन्होंने फिर I told him that he figured it out कि मतलब I think you can handle all of this, वो ये मैं तुम्हें IT audit की चीजें सिखा दूंगा बाकी, but बाकी client manager soft skills is something I feel like तुम्हें बस polishing की जरूरत है and you'll be good to go. And he gave me the opportunity to lead so many clients from UBL IT audit के perspective से, फिर मैंने Faisal Bank पे IT audit के perspective से lead करा. And the thing that I was missing out in audit, मैंने बैंक अल्फला के 2 बड़े प्रोजेक्ट्स लीड किए थे. मैं डायरेक्ट अपने CIO एंड CFO से टच में थी. उनको Yeah. मैंने फाइंडिंग्स अपनी डिस्कस करी बिफोर इवन इन्वॉल्विंग द रेस्ट ऑफ द टीम मेंबर्स. आई गॉट दैट एक्सपोजर बिकॉज समवन बिलीव्ड इन मी कि आई कैन डू इट. उसने बस मुझे सिखा दिया कि ये टेक्निकल पार्ट है, रेस्ट इज Yeah. ऑन यू. तो आई गेस इफ अगर आपको अलाउड है आर्टिकल्स में या अपने फर्म में 1 year कहीं स्विच मारना, go for it, start from scratch. Sometimes that really helps. It's risky because when I went to the interview for Deloitte, I had to tell them that 2.5 years देखें audit है, 1 year IT audit है, and still they did not care for it. They were like, भाई हम सब सिखा देंगे, you just need to be the right fit for UK, right fit for UK work culture, and that's what mattered. तो उस exposure के लिए फिर मैंने ये करा कि switch मारा. I fortunately met a good person. He let me lead and be my own person, and I give a lot of credit to that person today. That's well. I think Deloitte is well known, especially in UK, to be the people's firm. Both respected, everybody knows that, and the perspective. I think just to add on that opportunities point, I think once you're qualified, I think opportunities just come to you. फिर जो है ना सब आपसे ही काम करवाते हैं कि आप ही करो सब कुछ. बट वंस यू नॉट क्वालिफाइड दैट टाइम आपको खुद अपॉर्चुनिटीज के लिए थोड़ी सी स्ट्रगल करनी पड़ती है. यू हैव टू वर्क अराउंड दैट. लोगों से बात करो, meet with people, but that's what I felt. In the start, my focus was qualification as well. Qualify karo, and then in the start, I used to be in the back side. Okay, background mein kaam karo, do your good work. Senior know you, but manager don't know you too much. Like, okay, this guy does some good work, but not like isko abhi sab kuch karwa dein. So go for your qualification, and then once you are qualified, it's your time. एम बना देंगे वो आपको. It's और your आप time. आपको कुछ भी किया हो नहीं किया हो, आपको एम उनको बनाना Sure. पड़ेगा बिकॉज आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो. So, and I think that's something should be something everybody should be looking forward to. I think it's just this switch of department is something not really applicable to all the firms. I don't think most of the firms actually allow it, especially small firms. जहाँ पे तो होता ही हाँ. there's a mixture around there. But it's very, you need to be very careful कि आप आगे क्या करना चाह रहे हो 3-4 साल बाद, what you want to go for it, because आप 2 साल ऑडिट में कर रहे हो, 2 साल टैक्स में, 1 साल टैक्स में कर रहे हो, 1 साल IT में कर रहे हो, सो 4 साल आपको नहीं, कोई वो मिक्स नहीं देगा. सो एवरीबडी जस्ट किसी से डिस्कस करो, सीनियर्स वगैरह से अपने, कि भाई क्या करना चाहिए. नॉट एग्जैक्टली कि आपकी जो काम कर रहे हो उनके साथ करो, बट समबडी आउटसाइड मस्ट बी नोइंग. तो आई थिंक दैट्स समथिंग यू शुड बी डूइंग दैट. I think last thing जो पूछनी थी, and then we will probably conclude के how's life in Glasgow. I have been there once, not Glasgow, the Scotland side. It was cold and it was raining. So how do you feel it? यार ये तो पूरे यूके का मसला है ना, मेरे हस्बैंड को क्यों बोल रहे हो? It's more cold, I guess. so हाँ, okay. So स्कॉटलैंड का सबसे बड़ा मसला एक्सेंट. Yes. बहुत डिफरेंट एक्सेंट है. British accent is like really good.
अंडरस्टैंडेबल, हम शोज देख रहे थे, वो देख रहे थे, सब समझ आता है. ग्लासगो एक्सेंट थोड़ा डिफरेंट है, बट ऑनेस्टली आई एम गेटिंग द हैंग ऑफ इट. And now I find it really nice. अब मुझे मजा आता है स्कॉटिश एक्सेंट सुन के. अब ब्रिटिश एक्सेंट नहीं. Scottish is a bit different. Well, मुझे अभी तक थोड़ी struggle होती है because I haven't worked with many Scottish people. मेरे सारे बॉसेस स्कॉटिश हैं, सबके सब स्कॉटिश हैं, मेरे जूनियर स्कॉटिश हैं, मैं एक पाकिस्तानी बीच में हूँ. एंड फिर मतलब उनको फिर सुन सुन के वो समझ ही गई. True. Oh, that's. I think Glasgow, well, it depends because I was brought up and raised in Karachi, a city जहाँ पर like activities are happening, and as compared, I guess आप इस्लामाबाद से compare कर सकते हो कि activities हो रही होती हैं, night life है, traffic है, वो सब है. I think I needed an escape from that. So that's why मुझे Glasgow से एक like all my friends keep saying तुम अभी तक लंदन नहीं, तुम्हें 1 साल हो गया यूके में, तुम लंदन नहीं आ रही. And I said I will make a visit, but living wise मैं यहाँ पर I'm so content because like if I want to reach my office it just takes like 10-15 minutes. And अगर मैं अपने दोस्तों से पूछूं कि यार तुम कब ऑफिस पहुंचते हो, यार 45 minutes 1 hour तो लंदन में नॉर्मल है. Yeah. And I'm like यार कराची वाली ही लाइफ है sort of के रश में फंसे हुए, शारिफ फैसल आया चंडीगढ़. I was so done with that life. उस मामले मुझे बहुत अच्छा लगा. Glasgow is considered one of the friendliest cities, and वाकई मुझे बकायदा महसूस हुआ है. When I was here, मेरा यहाँ पर कोई friend कोई भी नहीं है यहाँ पर स्कॉटलैंड में. I don't know anyone, but it really helped me cope up because यहाँ पर मुझे इतने friendly लोग मिले, चाहे रोड पे चलते हुए लोग. I've heard लंदन में कोई आपको स्माइल भी करके देखे तो लोग कहते हैं कि something's wrong with that person. Glasgow में it's very common, you just say hi, hello, आप smile करके निकल जाओ. If you need help, there are people who will run to help you. I found a lady here जिन्होंने मेरा ये मुझे घर rent करने दिया when I had no bank accounts. I had like मैं उनको officially transfer, I had like cash with me, but I did not have a bank account to transfer, and she let me live in the house. आराम से even signed the deed with me, just trusting me कि I will give her all that she needs after I get a bank account. ये आप शायद किसी और सिटी में सोच नहीं सकते because ग्लासगो में एक फ्रेंडलीनेस, एक ट्रस्ट, एक सर्टेन लेवल ऑफ आपको फील होता है कि यार आप पे ट्रस्ट किया जाएगा, आपके लिए केयर किया जाएगा if you need it. So far neighbors वगैरह ने भी if I needed help they helped me out, and I feel like इस type of friendliness या एक environment के वजह से it really helped me cope up with everything. Like of course I do miss my family, I miss having friends, but Glasgow being a friendly city helped me a lot. No, I guess Scotland-wise, I have been to Edinburgh, so I think a lot of people are there actually from our side, the firms. But overall, the population mix in London is kind of a diverse. बहुत हर किस्म का बंदा है यहाँ पे, so you can't say कि भाई कौन है किस तरह का है. वहाँ पे properly, I think they're Scottish most of times, और बाकी nationalities बहुत कम है, so they have their own type of work culture या जो भी बोलें, they have that. And again, I heard in the whole Scotland, I think Glasgow is still most diverse as against others. खाना पीना ये वो सब कुछ it's still better. अपने देसी भी मिल जाता है. And there are things out there. I think Edinburgh वगैरह में इस तरह कुछ ज्यादा है नहीं, वहाँ पे बहुत कम है. Edinburgh tourist city है to be honest. मैं जब भी वहाँ जाती हूँ I'm missing Glasgow all the time. तो मुझसे तो 40 minutes दूर है Edinburgh, तो मेरे कुछ friends भी हैं वहाँ पर, so I just hop on a train 40 minutes. जैसे मैं Clifton जा रही हूँ जाती हूँ दोस्तों से मिलने. And यहाँ पर आते हैं तो वो हलवा पूरी खाने आ रहे होते हैं. यहाँ पर रेस्टोरेंट है अकबर्स, वो बहुत लोग प्रेफर करते हैं. तो बट यहाँ पर मोस्टली ना लोकल्स दिखेंगे आपको, लाइक पीपल हु एक्चुअली लिव हियर. तो उसके वजह से आई फील लाइक एनवायरनमेंट भी थोड़ा सा ना एक सर्टेन लेवल ऑफ कल्चर जो एक बना हुआ है वो रहता है. टूरिस्ट सिटीज में बिकॉज देयर आर सो मेनी पीपल कमिंग इन फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, देयर इज नॉट वन टाइप ऑफ कल्चर दैट एग्जिस्ट जो आप उस पे लाइक स्टैम्प कर पाओ कि दिस इज अ सिटी व्हिच इज दिस टाइप ऑफ सिटी. तो एडिनबर्ग में एक छोटा लेवल का लंदन है जिसपे टूरिस्ट आ रहे हैं, ब्यूटी देख रहे हैं, देख के जा रहे हैं. लोकल्स हार्डली हैं वहां पर, उनको भी चिढ़ हो रही होती है यार टूरिस्ट सीजन आ गया, अब ये होगा वो होगा. तो मेरे लिए एडिनबर्ग इज सॉर्ट ऑफ लाइक छोटा सा लंदन. सम लाइक
मेरे काफी फ्रेंड्स वहाँ रहते हैं, बट आई नेवर डिसाइडेड टू मूव देयर. दे टोल्ड मी मूव कर लो, डिलॉयट में मसला नहीं, बिकॉज एडिनबर्ग एंड ग्लासगो एक ऑफिस सॉर्ट ऑफ माना जाता है. मेरी आधी टीम एडिनबर्ग से होती है, आधी टीम True. ग्लासगो से. वी आर वन ऑफिस, बट आई नेवर डिसाइडेड टू मूव देयर. मुझे पसंद नहीं आया. I want to visit Glasgow, but उस दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी when I came over there next time. And anyway, so it was like whole day, and it was raining for like 3 days continuously. I was like, no, I have to go back to London now. Anyway, so this has been really helpful. हम conclude करेंगे. I think both of us, we have been involved in some of the work for people, for students over time. मैं अभी भी कर रहा हूँ. आपको थोड़ा सा भी slow हो गया है. You have to catch up on that. But what's your advice? Because when I see the people, इतनी ज़्यादा negativity, especially social media पे, I'm trying to combat that. कि जब कोई बच्चा आता है नया, सीधा उसको बोलता है आप तो फेल हो जाओगे ना. अभी वो बंदा आया ही नहीं है. अभी वो पूछ रहा है कि क्या होने वाला है, क्या होगा. नहीं, आप तो फेल हो जाओगे. एंड देन the thing I found, the people who are qualified, जो हो चुके हैं, they are busy with their lives. They are not able to give time unless कोई उनको dedicated जाके पूछे, तबीयत से जान पहचान का हो. They are not able to get time, give time to people. What do you think is a way out? किस तरह लोगों को थोड़ी सी हेल्प करनी चाहिए just as a community? आई डू अग्री. जब भी कोई पोस्ट आता है और मैं एक पॉइंट पे ना सिर्फ मॉनिटर कर रही होती थी कि यार पोस्ट पे कोई अजीब बातें ना हो रही हैं किसी किस्म की, तो समथिंग यू माइट हैव टू बैन पीपल फॉर एंड स्टफ. Yeah. तो वहाँ पर मैं खुद एक जनरल एनवायरनमेंट देखा कि बहुत डिस्करेज किया जाता है, ये नहीं करो, वो नहीं करो. एंड मे बी वो जो लोग बोल रहे हैं, मे बी इट्स नॉट अ जोक टू देम बिकॉज दे माइट हैव सफर्ड. तो उनको भी हम नहीं बोल सकते क्या जस्ट बी क्वाइट. तो मेरा मैसेज ये कि जब इवन मैं भी आ रही थी तो मुझे भी बहुत बोला गया, बहुत मुश्किल है. बिकॉज खैर मुझे तो सब नहीं बोला था, बिकॉज मुझे पढ़ने का शौक नहीं था. Okay. माय पेरेंट्स यूज्ड टू स्ट्रगल विद मी अ लॉट, यार ये कैसे पढ़ेगी, क्या करना चाहिए. पर आई वाज लाइक कर लूंगी भाई, हो जाएगा. कुछ ना तो कुछ कर लेंगे. कुछ ना कुछ हो ही जाएगा ना. लाइक मुझे शौक है पढ़ने का, बट आई एम नॉट स्टूपिड के कुछ हो ना पाए. तो बस ये सॉर्ट ऑफ था. तो फैमिली को भी थोड़ा सा दिखाने के लिए मैं कहा चलो यार ऐसे पकड़ लेते हैं, क्या होता है. माय मॉम यूज्ड टू स्ट्रेस ऑल द टाइम कि क्या होगा. बट चलो फाइनली नाउ शी हैज फेथ के ओके शी कैन डू समथिंग विद हर लाइफ. अब फेथ आया है. तो आई नो लाइक फॉर अ फैक्ट कि जब से मेरी ये वाली जॉब शुरू हुई है मैं टाइम नहीं दे पाई सोशल मीडिया पे. अगर मैं पॉजिटिविटी स्प्रेड करती थी या मेरे पास जो मैसेजेस आते थे, मैं डेफिनेटली उनको बोलती थी कि देखो तुम सीए एसीसी के बीच में चूज कर सकते हो, क्या रीजंस हैं. सीए के थ्रू बिग फोर का एक्सेस इजीली थोड़ा मिल जाता है एज कम्पेयर टू एसीसी, बिकॉज बहुत कम हायर होते हैं. तो चूज वाइजली, डी मॉड्यूल तक तो करो. फिर मैं बोलती अपना पाथ बताती थी कि मैंने भी डी मॉड्यूल तक करके फिर मैं आई जस्ट टुक द अदर पाथ बिकॉज आई डिड नॉट केयर फॉर सीए. मेरे दिल में नहीं था सीए करना है, मेरे दिल में था बस यार मुझे क्वालिफिकेशन चाहिए विच कैन हेल्प मी गेट अ गुड जॉब आउट ऑफ पाकिस्तान, एंड दैट्स व्हाट आई वेंट फॉर. आई कैन रिक्वेस्ट न्यू कमर्स के तब आप अगर चूज कर रहे हो बिटवीन लाइक अ करियर पाथ कि आपको इंजीनियर बनना है, अकाउंटेंट बनना है, तो आप अपना शौक देखो. आप अपना शौक देखो. डोंट आस्क, स्टॉप आस्किंग पीपल. आप लोगों से ये पूछ लो कि एडमिशंस कहाँ होते हैं, तरीका पूछ लो, बट डोंट लेट अ कमेंट सेक्शन डिसाइड व्हाट योर करियर पाथ शुड बी. बिकॉज जो एक्चुअली सक्सेसफुल हो चुके हैं ना उनके पास टाइम नहीं बताने का. जो सक्सेसफुल नहीं है, फारिग बैठे हुए हैं, वेट कर रहे हैं, मोबाइल पे लगे हुए हैं, उनके पास बहुत टाइम है. और उनको अच्छा भी चाह रहा है ना तो वो लोग भी रेकमेंड नहीं करेंगे कि आप करो. और फिर उनको तफरी सोच, आधे कमेंट सेक्शन ना तफरी सोच रही होती है, नहीं करो बर्बाद हो जाओगे, तुम्हारे बच्चे सीए शुरू कर देंगे, तुम नहीं कर पाओगे. उनको सिर्फ तफरी सोच रही होती है. तो आई वुड सजेस्ट के stop asking people what career path you should lead, because comment section is the last place you should look for. Maybe ask a successful person जो already qualify हो चुका है, जो मतलब आउटसाइड, अगर आपका गोल आउटसाइड पाकिस्तान रहेगा वहां बैठा हुआ, उसका आप मैसेज ड्रॉप कर दो लिंक्डइन पे कि आई जस्ट नीडेड एडवाइस, मैं इस पाथ पे जा रहा हूँ, व्हाट वाज योर पाथ लाइक, डू यू रेकमेंड इट. एज कम्पेयर टू पीपल जो अनक्वालिफाइड बैठे हुए हैं, जो फ्रस्ट्रेटेड बैठे हुए हैं, जो मुझे भी डिस्करेज करते रहते थे. as soon as I came in CA, I was told by multiple people including a few teachers कि
तुम बिग फोर मटेरियल नहीं हो, तुम बिग फोर कभी देख नहीं पाओगी. इफ आई हैड लिसन टू देम, मैं शायद अप्लाई भी नहीं करती. आज I've seen like 2 big fours and I'm an assistant manager in one. So I shouldn't listen to those people, even though वो लोग qualified लोग थे. I'm not saying वो लोग नहीं थे, वो teachers थे मेरे बकायदा. But just because मैं तफरी करती थी, मुझे बस like I wasn't a serious person. I'm not a serious person आज भी, but that does not mean that I did not deserve to be a qualified professional in a big four. So stop listening to people. अगर आपका passion है, go for it. गाइडेंस चाहिए अबाउट तरीका के किस दिन पेपर होते हैं, फी कैसे पे करनी, वो पूछ लो. करियर पाथ का पूछना छोड़ दो. जस्ट गो फॉर इट. That's massively helpful. जस्ट लाइक आई सजेस्टेड कि आपको अगर किसी क्वालिफाइड प्रोफेशनल को अप्रोच करना है जस्ट फॉर गाइडेंस या कुछ, तो आप लिंक्डइन के थ्रू कर सकते हो. बिकॉज आई थिंक मैं फेसबुक इतना एक्टिव नहीं रही हूँ, और हम प्रोफेशनल्स आई थिंक हम लिंक्डइन पे ज्यादा एक्टिव रहते हैं. लाइक आई सीन माय ओन पार्टनर बीइंग एक्टिव ऑन लिंक्डइन अ लॉट. तो प्रेम, अगर इफ यू आर कंफर्टेबल विद इट, तो आप मेरा और अपना लिंक्डइन का आप वो पोस्ट कर दो लिंक. एंड आई एम नॉट प्रॉमिसिंग कि मैं हर किसी को रिप्लाई करूंगी, बिकॉज आई नो उसके बाद बहुत सारा आएंगे. बट आई विल डेफिनेटली ट्राई माय बेस्ट जस्ट टू लाइक, if you want, apart from this interview, if you want further I guess insight in my journey, या फिर कोई मसले, या फिर specifically as a female आपको कुछ पूछना है कि क्या है, कैसे मैनेज होता है outside UK just as a single female, तो फिर just feel free. प्रेम, आप लिंक पोस्ट कर दीजिएगा. Thank you very much. That would be massively helpful for people because मुझसे बहुत से लोग पूछते हैं कि क्या किया आपने, कैसे आया, लेकिन of course I'm not a girl, so मुझे नहीं पता what's the struggle behind that because you know especially questions मुझे मतलब कोई ऐसा दोस्त है somebody ask यार क्या वहाँ पे ड्रेस कोड है, मतलब I know okay ड्रेस कोड है but I can't describe that कि क्या क्या है, what you need to buy, or no, there are a lot of things out there. आप जब अप्लाई भी कर रही हो तो एज ए गर्ल घर घर कैसे देखना है, बिकॉज चलो बॉय है तो कई किसी के पास बैठ गया एक हफ्ते के लिए, 2 हफ्ते के लिए. देर आर थिंग्स आउट देयर जब आप ट्रेवल कर रहे हो इंटरनेशनली, एंड देर आर लॉट ऑफ इश्यूज आउट देयर, सो यू गाइस कैन रीच उसका आउट पूरा टू सेशन अस. हो सकता है कि यहाँ पर आने के बाद क्या हुआ, ये पूरा सेशन अलग. And I think you guys can reach out to us. We try our best to respond to as many people as possible, and we'll try our best to help you guys. Thank you so much. Thank you everyone.